It was a memorable moment. Cameras are rolling. Big story. We're breaking here on India Today and getting you these images first. After 17 days of waiting, one by one they emerged out of the tunnel that they were building. They looked dazed, blinded by the flashlights, deafened by the enthusiasm of ministers, rescue workers and media people. They smiled on camera while their eyes kept looking for the known faces of their loved ones. They've braved the worst and they've come back alive and safe. It was a big moment for India. Late evening on 28 November, in a colossal effort of a joint operation by different government agencies and international bodies, all 41 tunnel workers at Silkyara tunnel were rescued unharmed and healthy. They were trapped inside the tunnel caused by a landslide for 17 horrid days. On 12th November, with a little more than 2 hours left for the night shift to end, when most of the 41 construction workers were looking forward to celebrating Diwali, the festival of lights, the landslide at Silkyara tunnel at 5:30 a.m. trapped them all in a section of the 4.5-kilometer stretch. It was about 200 meters from the entrance to collapse. ये घटना किस तरीके से हुई सर, पूरी जानकारी चाहिए। घटना आज प्रातःकाल को हुई है और जब कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन के सभी अधिकारी और जो विभिन्न विभाग के कर्मचारी हैं, हमारी फोर्सेज हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हैं, वो सभी यहाँ पर आए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है सर, जो फंसे हुए मजदूर हैं अंदर? वो अंदर ही हैं, सामने कोलैप्स का मलबा है और उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या उनसे कांटेक्ट हुआ सर? नहीं, मेरा किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट हुआ नहीं उनसे। The Silkyara tunnel is part of a 150 crore rupees, 890-kilometer long flagship Chardham project connecting all 4 pilgrim sites through 2-lane paved roads in the Himalayan state of Uttarakhand. All of them had come from remote corners of the country to make some extra money to support their families. Most of them were in their 20s, trapped in the cold tunnel and cut off from the world outside. मैम सभी डरे हुए थे क्योंकि किसी की ना कोई बातचीत हुई, ना कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। खाली जितनी ऑक्सीजन थी अंदर उसी में था। बस खाली सोच रहे थे कि कुछ हो रहा है, पता कुछ नहीं था, ना कोई कम्युनिकेशन थी, ना कोई बातचीत थी। खाली बस हम अंदर फंसे हुए थे, सोच रहे थे खाली बीमार से थोड़ा कर रहे तब 30 घंटे बाद कुछ मिला, ऑक्सीजन की हुई, खाने के लिए कुछ भेजा उन्होंने इसी पाइप में, 4 इंच की पाइप में। इसलिए मैम 24 घंटे तक का थोड़ा जो था वो थोड़ा भयानक था हमारे लिए। स्टार्टिंग में रात 8 बजे से ही, जब हम लोग की नाइट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, तो हम लोग गए थे 8 बजे, वहाँ अंदर घुसे थे तो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ गिरने लगा था मलबा। तो हमने कभी वैसे गौर नहीं किया, रेगुलरली कभी कभी गिरता है ऐसे बोल के, कभी वैसे गौर नहीं किया। सुबह के टाइम ठीक 5 बजे अचानक एकाएक ऐसा मलबा गिरा कि एक साथ बड़ा सा पत्थर गिरा, उसके पीछे पीछे इतना ज्यादा मलबा गिरा कि एक ही बार में पूरा टनल बंद हो गया। 24 घंटा तो बहुत ये था सर, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं था ना, खाने के लिए भी नहीं था। रात को आया तो ऑक्सीजन जब मिला तब हम लोग को थोड़ा ठीक लगा। रात को 11 बजे ऑक्सीजन मिला, दिन में गिरा था 7 बजे 6 बजे, तो रात को 11 बजे ऑक्सीजन मिला तो हम लोग को कुछ ना कुछ वो लोग करेगा बोल के विश्वास लगा, थोड़ा उम्मीद आया सर। ये आ रहा था, घर का याद आ रहा था, घर वाला कैसे रहेगा, क्या करेगा, वही याद आता था। हम लोग का परिवार को जितना है सबकी याद आता था। For the next 15 to 16 hours, the world outside was trying to make sense of the cost of the damage of the landslide. While the 41 men cut off from everyone worried about their predicament, their family members panicked. खबर हम लोग को तो एक दिन के बाद ही मिले थे, जब हम लोग उसको फोन लगा रहे थे और स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल, तभी हम लोग को कुछ खबर में हुआ। हम लोग मतलब महसूस किए कुछ तो हुआ होगा, तभी फोन नहीं लग रहा है, नहीं तो हमेशा से फोन तो ऑन ही रहता था, ऐसा सोचे। फिर एक दिन के बाद जो इसका बाहर में था, इसका चाचा है, उसी से मालूम हुआ। There was no communication, no food, but there was light. सबसे पहले तो
टनल के अंदर आग के 4 इंची पानी के पाइप का सप्लाई बाहर से काट दिए। जो पानी अंदर जाता था वो पाइप बंद कर दिए, प्लस जो बाहर से अंदर आता था वो पाइप खोल दिए। ऑक्सीजन भेजने और बातचीत करने के लिए हमारे पास एक बाहर का ही पाइप था, बाहर से जो सप्लाई पानी 4 इंची पाइप का आता है उसी से हम लोग। तो हमारे सर लोग ने बोला कि हम लोग के जीने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, ये 4 इंची पाइप, तो इसको जितना जल्दी हो सके इसको खोलने बोले। हमारे जितने भी लड़के थे सारे कोई ने एक साथ मिल के हौसला बढ़ाते हुए सर लोग बोले कि कोशिश करो जरूर, यहीं से हम लोग का एक ही उपाय है, अगर बातचीत होगा या फिर वो लोग कुछ मैसेज भेजेंगे तो बोल के हमने भी अंदर का पाइप खोला। 36 घंटों के बाद हमें रिस्पांस मिला, हमें ऑक्सीजन मिली। उसी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की जो पाइप थी उसी के साथ अंदर उन्होंने मूरी, बादाम, काजू, चने थोड़ी मात्रा में अंदर भेजे। 36 घंटों के बाद हमें खाने को और ऑक्सीजन प्राप्त हुई। मैया आप कोई ना दुख दिखाया, मैं क्या नहीं क्या जान उबार दे मैया मोरी। Each day, from the moment the news of them being trapped was confirmed, was a rigmarole for their family members. They lived by the phone, dreading its ring and heaving a sigh of relief when the call would get over. Hearing that they were trapped but had food, they kept tracking news 24/7 in hope and in desperation. They knew there was nothing that they could do to bring the men back home. Often, the only earning member, a father or a son or a husband. आपका बेटा स्वास्थ्य कैसा है? कहला अच्छा है। और घर पर बोलने लगा कैसे हैं? तो हम कहना अच्छे हैं, सब बढ़िया है। तो क्या यही खबर देते रहना, एक दिन छोड़कर तीसरे दिन बात कर लिया करो, जो कि मम्मी और बहन की बात हमें देते रहना। The government put all its agencies to work together and included international consultants to tide over the disaster. The heavy drilling machines were deployed. Manjeet's father watched helplessly. हम कहते हैं बदल कर अपने घर पर रहे, हम जाएंगे जहाँ करना है हम जाएंगे। अच्छा, घर पे रहे? हाँ, ये घर पर रहे और हम किसानी का काम करेंगे, मजदूरी तो जो तुम्हारे करे होता है वो कीजिए। मतलब अब आपसे दूर ना रहे हो? हाँ, हमसे नजदीक रहे, बनाए रखे, दूरी ना बनाए, जो कि एक बेटा हम खो चुके हैं। Inside the tunnel, 41 men pulled down the blue waterproofing sheets to use as beds and to cover themselves in cold nights. And they waited for the noise of drilling. फोरमैन था, सुपरवाइजर था, वो लोग सीनियर लोग पूरा हम लोग को भरोसा दिलाने लगा कि हम लोग को निकालेगा, कंपनी जैसे भी निकालेगा। सोचने में बीता सर जी, आधार सोने में। जैसे सोचते थे बाहर निकलेंगे तो ये खाएंगे, भूख के चलते तो खाना ही हम लोग को सपना में आता था खाने के लिए, कि ये खाएंगे वो खाएंगे। कहानी उनी सब अपना 2-4 गो मिलके अपना घर का मामला, इधर घूमने कहीं उधर घूमने का, सब बैठ के बातचीत करते रहते थे। कि 17 दिन ऐसा बीता कि हम लोग को कि पता ही नहीं चला 17 दिन कैसे बीता। 6 इंची का पाइप गया, उसमें बाद में बट्टल में डाल के खाना भी भेजे, खिचड़ी और फल मूल भी भेजे, ड्राई फ्रूट भी उसी में भेज देते, कपड़ा लत्ता, ब्रश, चावल सब भेजना चालू किया। वो 6 इंच का पाइप गया तो बहुत उम्मीद हुआ और खाने के लिए भी बहुत मिला सर। Through the same 6-inch pipe came the first image of the trapped men, captured in a semicircle formation, a gripping 30-second video. Filmed through a medical endoscopy camera, became the glimmer of hope. Rescuers adopted an alternative approach after horizontal drilling vibrations triggered additional debris falls. आवाज आता था, अरे रुक जाता था तो हम लोग को और क्या हो गया बोल के और हम लोग पूछते थे, बोलते थे वो लोग नहीं चलेगा ऐसे बोलते थे वो लोग। और आवाज़ आने से आज नहीं तो पहुंचेगा, कब पहुंचेगा बोलते थे हम लोग, आवाज़ आते थे। आवाज़ बंद होने से हम लोग थोड़ा डाउट लगता था, कब तक आएगा, मशीन नहीं चल रहा है क्या, आवाज़ नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते थे हम लोग।
The rescue team needed to dig 338 feet downward to rescue the trapped workers, simultaneously pursuing horizontal excavation as well. Time was ticking, and the country waited with bated breath for a breakthrough. "25-year-old Bhagwan Batra is trying to recover from the nightmare of 17 days. He goes around his village Talabeda in Odisha, taking care of his family land. Bhagwan hopes that he never has to go back to work in any infrastructure construction project. क्या आप वही प्रोजेक्ट में फिर से काम करने के लिए जाएंगे? नहीं जाऊंगा सर, और दोबारा तो नहीं जाऊंगा। हम लोग का ओडिशा का सरकार कुछ देगा तो यही पे करूंगा, दोबारा और नहीं जाऊंगा सर। But the reality of life might force them to take the road away from home again, and they all know it. এখন যদি কোনো একটা কর্মসংস্থান দেয় তাহলে তো যাইতে হবে না, আর যদি না দেয় তাহলে তো আমাকে যাইতেই হবে, যে কোনো জায়গাতে কাজ করে খাইতে হবে, নাহলে খাবে না কাজ করলে খাবো কোথায়? Nearly all of the 41 workers who were trapped in Silkyara tunnel come from rural farming families. Some of them were working on different other projects in Uttarakhand before they started working in the ill-fated tunnel. मैं गया था सितंबर 24 तारीख को, 20 तारीख को यहाँ से निकला था, 24 तारीख को मैं वहाँ सिल्कियारा बैंड टनल पहुँचा था। बगल गांव के जो लोग पहले से ही ठेकेदार के यहाँ काम किए हैं वो लोग मेरे को लेके गए थे। वहाँ हेल्पर में गया था, एक्सकवेटर में हेल्पर में गया था, तो वहाँ 6 महीना हेल्पर किया, उसके बाद मशीन चलाने सीख गया, तो मशीन चलाता था बीच बीच में। वो काम करने के लिए कितना पैसा मिल रहा था? पहले तो जब स्टार्ट में गया था तो 15,000 दे रहे थे, बाद में 18-19,000 और हो गया था सर। Their homes lack basic amenities, but their responsibilities drive these simple young men away from home's comfort for physical labor laced with danger. महादेव बोलो महादेव बोलो, तुम्हार घरे कोई दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो, कुओ तुम्हें निजे को बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो हाँ ठीक आछे। Mahadev from Jharkhand screamed for help as the rescue operation entered its 4th day. All of them desperately wanted to survive the ordeal. All that the authorities then could do was to keep communicating with them across the pipeline to keep their morale up, to keep their hopes alive. When machines failed, rat hole miners were called in. जब वो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और पूरा मक क्लियरेंस हो जाएगा, फिर मैनुअल जो कि हमारे पार्टीज हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो प्लस आर्मी की सहायता से उसको आस्ते आस्ते जाएंगे। 10 से 11, 12, 13 मीटर जो बचा हुआ है। 12 men manually removed each debris at a time to inch closer. For nearly 24 hours, they worked non-stop to clear the last 10 to 12 meters of debris. हमारे साथ मौजूद हैं, अब आइए आपसे बात करते हैं। वकील हमारे साथ है, वकील हसन, मुन्ना कुरैशी जी, और काफी जो आपका सारा टीम है यहाँ पे। क्या मिशन आपको दिया गया था? क्या आपके पास इक्विपमेंट था? कैसे आपको बोला गया इतना टाइम है, कम टाइम है और हमें उन वर्कर्स को बचाना है?
इतना टाइम हमने उनको रेस्क्यू किया, तब तक काम कंटिन्यू रहा। और आप इस चीज को हम ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी तारीफ ज्यादा कर दें, ये आप वहां से किसी से भी पूछेंगे सब यही बताएंगे, हमने कंटिन्यू काम किया। मुन्ना कुरैशी, आप हमें बताइए कि उस वक्त जब आप लोग उस टनल में थे, क्या आप लोगों के माइंड में था? ये काम तो आपको आता था, पर ये काम था या काम के अलावा भी एक ये कुछ और आपने इसको एक मकसद अपने लिए बना लिया? मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था। जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है। और लोगों को हमसे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी पड़ी। Munna Qureshi was the first miner to reach the trapped men. The rescuers flashed victory signs, signaling their massive win. Everyone heaved a sigh of relief as the 41 men came out to safety. But at the same time, questions started to haunt. Were safety protocols followed? A comprehensive assessment conducted by India Today's open source intelligence team and corroborated by on-site observations has brought into light several breaches of regulations. The first major lapse on the part of the construction company was that it did not create a safety exit route. As per SOP, tunnels exceeding a length of 3 kilometers are required to incorporate an escape route to ensure the safety of individuals in the event of a disaster. As per the plan, a 400 mm concrete false floor was also planned in the tunnel, but no such flooring existed on site. On site, reports revealed that no trench cages or safe tubes were used for the workers working in unprotected parts of a trench. Trench cages serve a crucial role in safeguarding workers from potential cave-ins. However, they're not designed to shore up or provide support to trench walls on their own. If the engineers and city planners and then the road planners and hydro infrastructure planners, they understand first the geology, then ecology, and then they design the infrastructure and make nature as an ally to fight disaster in the Himalayas. The tunnel guidelines stipulate steps for rapid evacuation in the event of a haulage failure. Hume pipes placed after one of the earlier accidents had also been removed even before the completion of work at the tunnel. Hume pipes in tunnels are concrete tubes that run the length of the tunnel during the construction phase. These pipes meant for rescue in case of tunnel collapse were removed, while a significant portion of the work was still left. These pipes also work towards eliminating toxic gases produced during the construction of tunnels. Within a day of the miraculous rescue of all 41 workers, the National Highways Authority of India ordered a safety audit of more than 24 tunnels it's building across the country. A hope for a better India with better infrastructure, where each